हाय ऑल ऑफ यू। और सब कैसे हैं? पढ़ाई कैसे चल रहा है? A very warm welcome to you all to this chemistry session. Myself Vinita from Catch 25 Science Academy. So today in this video we are going to do fourth part of ionic equilibrium, that is solubility product and common ion effect. ये दो टॉपिक्स मैं यहाँ पे कवर करने वाली हूँ. Okay. You have to see entire video to gain a complete knowledge. The half knowledge is always dangerous. So do watch complete video. So let's start with solubility. Solubility equilibria. Solubility equilibria क्या होता है? So some salts are sparingly soluble in water. तो जैसे ही हम लोग वाटर में सॉल्ट डालेंगे, it will get partially dissociated into its ion. अब ये रिवर्सिबल है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी आएगा. तो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मैं k ले लेती हूँ. I will take it as k. K will become He plus Cl minus upon HeCl. Now this is sparingly soluble salt. इसका मतलब है बहुत कम अमाउंट डिसॉल्व हुआ है. क्यों कम अमाउंट डिसॉल्व हुआ है? क्योंकि वेरी लेस अमाउंट हैज गॉट आयोनाइज्ड. सो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है बिफोर डिसोसिएशन एंड आफ्टर डिसोसिएशन इज ऑलमोस्ट सेम, कांस्टेंट. तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl इज कांस्टेंट और उसको मैं K डैश ले लेती हूँ. So I can write this equation as K into K dash, that is equal to He plus Cl minus. Let K into K dash be Ksp. What is Ksp? Solubility constant, solubility product. इसको क्या बोलते हैं? Solubility product. ओके. नाउ सपोज तुम्हारा सॉल्ट है AxBy. सो दिस विल गिव यू व्हाट? AY प्लस BX माइनस. इसको हम लोग बैलेंस करेंगे. दिस इज X, दिस इज Y. तो इसके लिए मैं Ksp क्या लिखूंगी? Ksp इज इक्वल टू AY प्लस रेज टू X अपॉन BX माइनस raised to Y. So this is solubility product. So this formula is very important. You have to remember, you have to note down this formula in a list of important formulas because अब इसके ऊपर काफी MCQs अपने को solve करने हैं. Relation between solubility and solubility product. Solubility is what? What is solubility, all of you? Solubility is, सबसे पहले solubility is denoted by S. S का मतलब होता है solubility. Now what is the definition of solubility? The number of moles of a salt or a compound or a substance that is getting dissolved per unit volume of solution. So this is solute. This is nothing but solute. So solubility का फॉर्मूला और मोलैरिटी का फॉर्मूला सेम है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोलार सल्यूबिलिटी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मोलार सल्यूबिलिटी. और उसका यूनिट क्या है? मोल पर लीटर. That is same as that of molarity, concentration. Now we have already done this formula. Ksp is equal to A, क्या था वो? A, what was the formula? देख लो. AY plus AY plus raised to X
Bx minus raised to y. Okay. Now suppose you have a salt. हम लोग ने यही salt की बात की थी ना. So this is getting dissociated into a y plus b x minus. This is x and this is y. तो अगर मुझे इसका concentration calculate करना है, so concentration is nothing but molar solubility, which is denoted by S. And Bx minus will be what? Y into S. यहाँ पे मैं substitute करूंगी. तो फॉर्मूला क्या हो गया? So Ksp is equal to x raised to x, y raised to y, s x plus y. So this is one of the another important formula which you have to note down, because इस पे भी हम लोग क्या करेंगे? MCQs करेंगे. And this is the relation between solubility product and solubility. नाउ कंडीशन ऑफ प्रेसिपिटेशन. जो उसके पहले अपने को आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ना पड़ेगा. क्या होता है? आईपी, आयोनिक प्रोडक्ट. सो आयोनिक प्रोडक्ट इज नथिंग बट सेम ए वाई प्लस रेज टू एक्स अपॉन बी एक्स माइनस रेज टू वाई. बट ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, इट इज अदर देन इक्विलिब्रियम. अदर देन इक्विलिब्रियम. और वो जो KSP वाला फॉर्मूला है ना, KSP वाला, उसमें ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है. दिस इज द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज अनदर देन इक्विलिब्रियम. जैसे हम लोग ने केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टडी किया है, Q and QC and KC सेम. So if IP is equal to KSP, so solution कैसा रहेगा? Saturated रहेगा and there will be no precipitation. So no precipitation, or you can say precipitation can occur also. There will be an equilibrium. We can say, ये बोलने से अच्छा है हम लोग क्या बोलेंगे कि equilibrium जो है it is getting established. Instead of writing this, हम लोग बोलेंगे there will be an equilibrium. Equilibrium will get exist. Suppose if IP is greater than KSP, IP is greater than KSP, so solution कैसा रहेगा? Solution will be super saturated, and super saturated है इसका मतलब precipitation will occur. Third condition, IP less than KSP. For this, solution will be unsaturated and there will be no precipitation. So I am repeating it. If IP is greater than KSP, precipitation and no precipitation will simultaneously occur with equal rate. So equilibrium will exist. IP greater than KSP, precipitation will occur. Therefore, solution is supersaturated. IP less than KSP, no precipitation. No precipitation यानी solution is unsaturated. Now, let's start with MCQs. So first question है, solution is said to be saturated with electrolytes. अभी just हम लोग ने किया, ये इसके लिए मैंने करवाया है. IP is equal to KSP. Solubility product is applicable for saturated solution. Saturated solution होगा तभी equilibrium आएगा.
एंड इक्विलिब्रियम पे सल्यूबिलिटी प्रोडक्ट आता है. If S is solubility product and एक स्मॉल है और एक कैपिटल है. एक मिनट, मैं बराबर से बनाती हूँ नहीं तो कंफ्यूजन होगा. दिस इज स्मॉल एस एंड कैपिटल एस इज small s is solubility and capital S is solubility product KSP. So you have a binary salt AB. तो इसके अंदर x is 1, y is 1. इधर 1 है, इधर भी 1 है. So KSP that is equal to x raised to x, y raised to y, s raised to x plus y. So ये KSP यानी बड़ा S. 1 raised to 1, 1 raised to 1, छोटा S, 1 plus 1. तो ये क्या होगा? S is equal to S square. So therefore S is equal to root of S. So answer is C. Next question, read करो. The precipitation takes place when product of concentration of ion. So precipitation takes place when IP is greater than KSP. So product of concentration of ions, इसका मतलब IP. Ionic product. IP is greater than KSP. So answer is what? It will be B. Next question. An aqueous solution of CaF2 contains 2 into 10 raised to minus 4 mole liter inverse of CaF2. KSP will be. So now CaF2. Here x is 1, y is 2. X is 1, y is 2. So KSP will become 1 raised to 1, 2 raised to 2, S 1 plus 2. That is 4S cube. कितना होगा? So we can write it as C option. Answer is C. Okay. Let's move on to next question. Solubility product of sparingly soluble salt Ag2CrO4 is 4 into 10 raised to minus 12. The molar solubility of salt is. S calculate करना है, KSP दिया है. You have a salt Ag2CrO4. So this will give you Ag plus CrO4 2 minus. Balance करेंगे. So from this what we can say? X is 2 and y is 1. So KSP is equal to 2 raised to 2, 1 is to 1, S 1 plus 2. That is again 4S cube. So S is equal to KSP raised to 4 raised to 1 by 3. So all of you just substitute in your given equations. Substitute karo. That is 4 into 10 raised to minus 12 raised to 4. 4 cancel. 10 raised to minus 4. That is A option.
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दिया है ऑलरेडी, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके दिया है. BaSO4 is giving you Ba2 plus SO4 2 minus. So KSP will be what? Ba2 plus का concentration into SO4 2 minus का concentration, that is A. Next question. Read करो. Solubility product KSP of CaSO4 is given. KSP दिया है. And again they are telling you to calculate S. So CaSO4 में Ca1 है, SO4 is 1. So KSP is equal to S1 raised to 1, 1 raised to 1, S1 plus 1, that is S square. So S will be how much? KSP raised to half. So it will be how much? 64 into 10 raised to minus 6 raised to half. So it will get how much? 8 into 10 raised to minus 3. That is the option. Let's move on to next question. Solubility product of CuS, Ag2S, HGS are given respectively. The solubility of the sulfides are in order of. So CuS के लिए X is 1, Y is 1. So KSP is equal to S square. And therefore S is equal to KSP raised to half. तो ये कितना होगा? 10 raised to minus 31 raised to half. तो मैं अभी इसको क्या करती हूँ? 10 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ. So it will become minus 32 raised to half. So finally I will get root 10 into 10 raised to minus 16. Okay. So this is the solubility product for CuS. Similarly, Ag2S. Now for this, X is 2 and Y is 1. So KSP क्या आएगा? 1 raised to 1, 2 raised to 2, S1 plus 2. That is 4S cube. So S is equal to KSP raised to divided by 4 raised to 1 by 3. वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ मैं. 10 raised to minus 44 by 4. तो ये कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 10 raised to minus 44 raised to 1 by 3. So this will become, मैं इसको पॉइंट को शिफ्ट कर देती हूँ. So ये कितना होगा? This will be the cube root into 10 raised to minus 15. So this is the value. Similarly, I'll calculate HGS. So इसके लिए भी X is 1, Y is 1. So S will be what? KSP raised to half. So that is 10 raised to minus 54 raised to half. तो ये कितना हो जाता है? 10 raised to minus 27. So अभी यहाँ पे 10 raised to minus 27 ये सबसे छोटा नंबर है. देन उसके बाद 10 raised to minus 16 है एंड देन 10 raised to minus 15 है. So it will be what? HGS. फिर ये किसका है? Ag2, sorry, Cu2S का है. And this is for Hg2S. Okay. Solubility will be सबसे ज्यादा तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ए ना. तो आंसर इज ए. ओके ऑल ऑफ यू. चलो काफी लंबा सम था. So let's move on to next question. Which of the following is correct representation of Ag2CrO4?
So अभी जस्ट मैंने इसका तुम लोग को डिसोसिएशन बताया था करके, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होने का. CrO4 इज पॉलीआयन, so it will give you Ag plus CrO4 2 minus, and then इसको बैलेंस करने का. So according to this, what you will have, Ksp is equal to Ag plus raised to 2 and CrO4 2 minus. That is the which option? B option. Okay. Which one is most soluble? Ksp is directly proportional to S and S is directly proportional to solubility. So कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है? Which value? 10 raised to minus 16 is the largest one. तो Ksp इसका मैक्सिमम है, तो इसका S भी मैक्सिमम होगा, and therefore answer is the solubility of sparingly soluble binary electrolyte is equal to. मीन्स S पूछा है AB, तो इसके लिए Ksp is what? Equal to S raised to 2. So S is what? Square root of Ksp. So इसका आंसर क्या आएगा? Yes, all of you, it will be a B. Next question करते हैं. Solubility of calcium hydroxide is root 2. Its solubility product is, means solubility दिया हुआ है calcium hydroxide का, CaOH twice will give you Ca plus 2 plus 2OH minus. तो इसके लिए अगर मुझे this is root 3, so this will be root 3 and this will be 2 into root 3. ठीक है. Ksp कितना रहेगा इसका? So let's see its formula. It will be what? X raised to X, Y raised to Y, S X plus Y. So it will be what? X is 1 year and Y is 2 year. So it is 4S. Solubility is root 3. तो कितना आएगा ये? 4 3 root 3. So this will become how much? 4 3s are 12. 12 root 3. So it is D option. Okay, all of you. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द सल्यूबिलिटी ऑफ A sparingly soluble electrolyte MQAR in water is given by the expression. तो छोटा सा डेरिवेशन है, कर लेते हैं फटाफट. Here X is Q and Y is R. This is Q and this is R. So Ksp will become Q raised to Q, R raised to R. Ksp Q sorry S आएगा ना, S Q plus R. So Ksp divide by yes, all of you. So now S will become how much? Ksp raised to 1 by कौन सा ऑप्शन है? B. ओके,
चलो नेक्स्ट, solubility product of CuS is given. KSP is 8 into 10 raised to minus 36. The concentration of Cu2 plus ion required to precipitate S2 minus ion with concentration 4 into 10 raised to minus 6. S का concentration दिया हुआ है and KSP is given. KSP will become how much? Cu2 plus S2 minus. This is 8 into 10 raised to minus 36. ये अपने को कैलकुलेट करना है and this is given 4 into 10 raised to minus 16. So ये कितना हो जाएगा? 8 into 10 raised to minus 36 upon 4 into 10 raised to minus 16. 1 जा 2 जा. 2 into 10 raised to minus 20. It is C option. Okay. नेक्स्ट इज कॉमन आयन इफेक्ट. तो जो अभी हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में बफर सोल्यूशन लिया था वो सेम सोल्यूशन लेना है यहाँ पे. सो आई एम टेकिंग CH3COOH. कॉमन आयन इफेक्ट स्टडी करने के लिए वी हैव टू टेक बफर सोल्यूशन. CH3COOH माइनस H प्लस. एंड नेक्स्ट हम लोग ने क्या लिया था? CH3COONA. ये रिएक्शन स्टॉप हो गया. This reaction is going on because it is a reversible reaction. Now here concentration of CH3COO minus is increased. Why? Because it is a common ion. इसका concentration ज़्यादा है. So when its concentration is more, reverse reaction will take place. According to Lee Chatelier, reverse reaction takes place. रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होगा तो CH3COOH का मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा. मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा तो आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH will decreased. दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट. सो कॉमन आयन इफेक्ट होने के वजह से क्या होता है? Ionization of weak electrolyte gets suppressed. This is common ion effect. Okay. When ammonium chloride is added to a solution of ammonium hydroxide, so क्या common है यहाँ पे? NH4 is a common ion. This will give you completely and this will give you partially. So NH4 का concentration क्या होगा? Increase होगा, जिसके वजह से इसका डिसोसिएशन डिक्रीज होगा. मीन्स OH माइनस का concentration डिक्रीज होगा. So it will be a C option. When sodium acetate is added to a aqueous solution of acetic acid, अभी हम लोग ने किया ना, ये कैसा solution है? It is a buffer solution. So this is a common ion. ये आयन के प्रेजेंस के वजह से क्या होगा? इसका जो रिवर्स आयोनाइजेशन जो है वो डिक्रीज होगा. इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा.
सो pH क्या होगा, इंक्रीज होगा, सो इट विल बी बी। एंड ये कौन सा सोल्यूशन है, एसिडिक बफर सोल्यूशन। ओके, बट उसका और पीएच का कुछ रिलेशन नहीं है, मैं जस्ट बता रही हूँ तुम लोग के नॉलेज के लिए। आयोनाइजेशन ऑफ CH3COOH will decrease, H plus का concentration will decrease and therefore pH will increase. What is to be added to water to wash the precipitate of BaSO4? So उसका precipitate wash करने के लिए यहाँ पे मुझे उसका कॉमन आयन ऐड करना पड़ेगा। तो उसका कॉमन आयन क्या है, H2SO4। Dissociation of H2S takes place as H2S gives you H plus H2 minus. If NH4 is added to it, yes, all of you read this question fast. Second question. Dissociation of H2S takes place as H2S giving H plus H2 minus. If NH4OH is added in it. Now, ये ऑलरेडी यहाँ पे पता है डिसोसिएट हो रहा है। Ammonium hydroxide is a weak base, so it will give you NH4 plus OH minus. अब इसका OH minus और इसका H plus will react to give H2O. So इसका मतलब क्या है, H plus consume हुआ, so H plus का concentration decrease होगा. So according to, since this is a reversible reaction, according to Le-Chatelier क्या होना चाहिए, इसका H plus का concentration increase होना चाहिए. So अगर इसका concentration increase होगा तो इसके साथ में H2S भी है, इसका भी concentration क्या होगा, increase होगा. So it is the option. Okay, so all of you, this was my last MCQ for ionic equilibrium. I hope तुम लोग को ionic equilibrium solving करने के लिए मेरा कुछ ना कुछ तुम लोग को help हुआ रहेगा, ये videos का help हुआ रहेगा. So please like and share my video with your friends, because your friends may be also feeling they are maybe facing same difficulty as you are facing it. Okay, all of you. So I'm stopping it here only, and we'll meet in next video. In next video, my next video will be on thermodynamics. Okay, all of you. So bye bye. Take care.